Welcome back, guys, and assalamu alaikum. So today we will continue working on creating our repositories, updating our repositories project. और इसमें हमने last time db context blog engine db context class add कर दी थी, और let me rebuild once so that कि ये errors वगैरह ख़त्म हो जाएं यहाँ से। और इसके अलावा हमने इंटरफेस तो ऐड कर दिया था आई पोस्ट रिपोजिटरी का, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग थी, तो हम वो भी आज ऐड करेंगे। जैसे डाटा डॉट इंटरफेस, इसमें हमने आई पोस्ट रिपोजिटरी ऐड की हुई है, लेकिन इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐड करते हैं, क्योंकि एट द एंड हम इसी रिपोजिटरी को कॉल कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो इधर डाटा डॉट रिपोजिटरीज के प्रोजेक्ट में मैं एक क्लास ऐड करता हूँ। पोस्ट रिपोजिटरी, एक हमारे दोस्त ने उन्होंने कमेंट किया यूट्यूब चैनल पे ही इस वीडियो में कि एक वीडियो में कि आप हिंदी में समझाएं, तो दैट्स वाई आई चेंज द मोड सो दैट के बेसिक पर्पस तो ये है कि आप लोगों से नॉलेज शेयर किया जाए ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो इट डजंट मैटर कि वो इंग्लिश में है या फिर उर्दू में या हिंदी में। एंड ये क्या स्टोरी है कि इंग्लिश में क्यों स्टार्ट किया था मैंने, ये भी इसके लिए एक अलग पोस्ट बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। सो पब्लिक क्लास पोस्ट रिपोजिटरी, और ये एक्सटेंड करेगी आई पोस्ट रिपोजिटरी से, ठीक है। और इसके लिए हमें रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा डाटा डॉट इंटरफेस प्रोजेक्ट, राइट। सो मैंने इसका रेफरेंस भी ऐड कर दिया, और इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हाई पोस्ट रिपोजिटरी, यार ऐड तो कर दिया। और यहाँ पे हमारा पोस्ट की क्लास है, जो कि हमारा पोस्ट का मॉडल है, और इसकी प्राइमरी की इंटीजर टाइप की है हमारी, और बेसिकली ये आई पोस्ट रिपोजिटरी ऐसे इम्प्लीमेंट करेगी ये वाली क्लास, और हमें यहाँ पे अपनी जेनेरिक रिपोजिटरी भी ऐड करनी है, ठीक हो गया। और बेसिकली ये जो जेनेरिक रिपोजिटरी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने भी करनी है। सो ये जेनेरिक रिपोजिटरी इंप्लीमेंट करेगी आई जेनेरिक रिपोजिटरी इंटरफेस। बेसिकली जो हमारे रिपोजिटरी के करंट फीचर्स हैं वो जेनेरिक रिपोजिटरी में होंगे, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक हमें मेथड चाहिए तो हम वो इस स्पेसिफिक रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पे रिपोजिटरीज के प्रोजेक्ट में एक और क्लास बनाते हैं, generic repository, right, or that will be a public class, और इसमें हम जो है वो बताएंगे कि हमारी लेट्स से टी एंटिटी, सो यहाँ पे हम जेनेरिक्स यूज़ कर रहे हैं, और टी की होगी एक इसकी, और ये एक्सटेंड करी होगी आई जेनेरिक रिपोजिटरी इंटरफेस को, जो कि फर्दर हमारी टी एंटिटी और टी की लेगा,
और टी एंटिटी जो है हमारी एक क्लास है, राइट। और ऐसे, और इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करवा देते हैं। और बेसिकली इसमें एक मेथड है जो कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, जो कि है गेट एसिंक, राइट। सो उससे पहले ये गेट एसिंक इंटरनली डीबी कॉन्टेक्स्ट से एंटिटीज की लिस्ट को फैच करके लाएगा। उससे पहले हम आई लॉग इंजन डीबी कॉन्टेक्स्ट इसका रेफरेंस रखते हैं अपने पास क्लास में, और एक और रेफरेंस रखते हैं डीबी सेट का, जो कि ये टी एंटिटी जो जेनेरिक हमने एंटिटी रखी है इसका डीबी सेट होगा, ठीक हो गया। और ये डीबी सेट हम इंपोर्ट करवा लेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से। Alright, so next thing is how to set that db context and db set. For that reason, ctor tab, और हमें बेसिकली अपने कंस्ट्रक्टर में ये कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करवाना है, और ये होगा जी दिस डॉट db context इज इक्वल टू db context, right, in this way। एंड जो हमारा db set है that should be उसी db context जो हमें ऊपर मिल रहा है उसी के अंदर वो एंटिटी जो जेनेरिक टाइप की है, जो भी उस टाइम पे कॉल के अंदर इन्वॉल्व है, उसका सेट असाइन कर दिया हमने उसको, राइट। तो डीबी सेट भी इनिशियलाइज हो गया और आईडीबी कॉन्टेक्स्ट भी इनिशियलाइज हो गया। और नेक्स्ट जो हमारी कॉल है गेट एसिंक, उसमें हम क्या करेंगे, राइट, और इसमें हम करेंगे जी लेट्स से रिटर्न await and db set dot to list async, राइट। और इसके साथ ही ये हमारा जो and that should be virtual because we are implementing an interface, we can make it virtual so that in the child classes that can be overridden, right। और हम यहाँ async कीवर्ड भी यूज कर लेंगे, ठीक हो गया। एंड बेसिकली ये हमें अब लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ टी एंटिटीज रिटर्न टाइप को चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इट इज सेइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ऑलराइट। सो बेसिकली हमें वहाँ पे अपनी डेफिनेशन भी अपडेट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स गेट एसिंक का मतलब है कि सारी लिस्ट हमें चाहिए, दैट शुड रिटर्न लिस्ट ऑफ एंटिटीज नॉट सिंगल एंटिटी, राइट, लाइक दिस। एंड लेट्स गो बैक टू द repository implementation, and that is fine now, right। And if we go further back from here to our
where we wanna go next? I think in the post repository, yeah, and we will simply add the reference, and the next thing will be generic repository like this. Alright, and yeah, we need to make sure that we are passing the context in the base of this class, which is generic repository, right? So for that reason we will going to create a constructor, and that constructor should pass context to the base class, and that would be, let's say, I log engine db context, and we will pass that context to the base class, right? And that is fine now, right? So our post repository implementation is also completed, our generic repository implementation is completed, and our block engine db context looks fine. So the next thing is, let's add the bindings in the infrastructure dependency injection project, right? In the repository module, we are going to inject those changes. What it is saying. All right. The packages are, by the way, I have committed the code from previous episode to the repository. You can get the latest code from there. All right, so the next thing is, we basically need to read connection string from Appsection.json. Make sure we have right provider configured here, and we will attach our db context, that is block engine db context, to our provider here, and we will make sure that unit of work is also injected into the services. And I think after that we are good to go to give a try once to see the implementation is right. So first of all, let's go to the website or startup project, and let's go to the appsection.json. Here we need to add the configuration for connection string. Let me add one here, and because we are going to use SQLite, so the connection string will be a little bit different as compared to the SQL or MySQL, right? So let me add connection string here. That will be connection string, the standard name, right? And the property it will have, let's say, default connection, right? And for the MySQL development purposes, I have a dedicated folder which resides here in my drive on C, and C has a folder dbs, and it should contain our ublock.db file, right? And we have missing comma, so I think that's fine now. And we are going to use these properties in the repository module to inject the
repository implementation and unit of work implementation into the services. So first of all, let's read that connection string. How to read, what are the different ways to read the appsetting.json file? For that one, I have another separate episode already on my channel. You can watch that and you can try different ways, but I am straightforward going to read the connection string from my configuration object. Default connection, right, and services dot add db context, and is that one available? Not yet, so let me add block in db context, right, and that will require to reference the repository project and the dependency injection. So it seems taking some time, so let me cancel and let us add that manually. We'll see later why this is happening. So मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ जी अपना repository का project, and now that should be fine. All right, so next thing is options that are available. I am going to use SQLite like this, and we have connection string already. Sorry. And next thing I want here is SQLite options dot. There should be a method like migration assembly, right, and there should be name of this assembly, which is our blog engine.reddit repositories. Right now I am giving this one a constant string, but we'll make sure in next episode to make it dynamic, right? And the use SQLite reference is missing. For that one we need to add reference for this into our repository project, right? Let me add a reference. Manage NuGet packages. SQLite. So it is here, Microsoft.entityframework core.sqlite. That should be working fine for us, and let's install it.
I think it's not installed. Let's say we have 3.1 framework here in the project, so I think that should be compatible. We'll update to .NET 5 later on in next episode when we migrate our solution to .NET 5. Alright, that is installed, and if now you can see we have resolved that reference issue as well. And the next thing is the spelling mistake. I think migration assembly, right? Alright, so the next thing will be the binding into our services for our context. For that one, we're going to use scoped type of reference I blog engine db context and blog engine db context. Alright, and the next reference will be for our unit of work, that will also be scoped one. And for that one, right, so we have configured our repository context, we have configured the unit of work, and the next thing will be our I post repository, that will also be scoped one. Right, I have commented out the line in our test for project. We will update that one later. So I guess our data layer is ready because we have configured all the required things, and let's give it a try to by adding initial migration for our project. Right, for that one, let me open the package manager console, although you can do that one in the command line as well. So इसमें हम select करेंगे जी अपना repository को project, and let me try with add migration.
By default, we are not able to see the add migration support in the console. For that one, we need two packages. Right, one is entity framework tools, I guess, and the other one is, let me show you. Let's go to the data project, basically the repository project, and इसमें मैं खोलता हूँ जी अपना cs proj file. Alright, it's not added, and let's find that the tools packages on the NuGet package manager. core.tools, that one, and इसका भी हम 3.1.1 पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें. Okay, can I accept that one? Yeah, that's added. So एक दफ़ा और ट्राई करते हैं जी. Add dash my now add migration is available, you can see that, and let me specify the startup project, which is blogengine.website. Right, and the name of the migration will be init, because we are going to add initial changes. Sorry, and it says that, all right, so we need to add that design time support to the our website project. This is required to make to access the entity framework core from command line. सेम वे हम NuGet पैकेजेस में जाते हैं और वहाँ पे entity framework core.design को सर्च कर लेते हैं, फर्स्ट पैकेज फ्रॉम द टॉप, और इसका भी वही 3.1 वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं. ऑलराइट, it's installed. Let me rebuild the solution. Basically डिफरेंट पार्ट्स में करने का मकसद डाटा लेयर इंटीग्रेशन का ये था कि क्योंकि थोड़ा सा लंबा काम है, थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ लेंथी टास्क, सो टू मेक श्योर वी आर नॉट गेटिंग बोर्ड, तो इसको मैंने पीसेस में डिवाइड कर लिया था. होपफुली वी विल गोइंग टू कंप्लीट दैट इम्प्लीमेंटेशन टुडे इन दिस एपिसोड, and if there are minor things we will do in another episode to make sure we complete the data layer implementation. So the next thing is could not load assembly. All right, show reference to the startup project. All right, so why this has happened, because although we have integrated that repositories and registered those services here in the repository module, but we haven't called that configure module from within our startup project. So let me add that one here. Right after this set of services, right before this set of services.
So for that one, let me add repository module dot configure and in the configuration we are going to pass the parameters. But another good way is I think हमें उस तरीके से करना चाहिए कि ऑल्दो अभी एक रिपोजिटरी मॉड्यूल है, लेटर ऑन एक सर्विसेज मॉड्यूल आएगा, एक कॉन्फ़िगर मॉड्यूल आएगा, तो तीनों को अलग अलग यहाँ पे हम उसकी बाइंडिंग ऐड करने से बेहतर है कि हम यहीं भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर एक एक्सटेंशन की क्लास बनाते हैं एंड लेट्स कॉल इट एक्सटेंशंस, राइट। और इसमें हम कहते हैं जी कि एक मेथड है स्टैटिक टाइप का जो कि रजिस्टर कर रहा है, लेट्स से DI dependency injection services, or not DI, let's say register services, right? Or let us make it extension of iService collection services and configuration like this, and let us add the references for those. And here we can say that repository module dot configure, and let's pass straight away services and configuration to this, right? And what it's saying that, all right, let's make it static as well. right, so now हम ये मेथड जो एक्सटेंशन मेथड है अपने startup.cs में कॉल कर लेते हैं from app dot it should be available, right? So not here, it's a extension for services, so it should be right here. And for that one, services dot what was the name of the extension? Register services. And let's see if we have reference for that one. Services dot register services, nope. And let me add the reference for the DI project here. And now we have the reference, and next thing it requires is the configuration iConfiguration object. So for that one, let us add a property here, public iConfiguration. This is to read the configurations. And name it configuration.
right? And to make sure that is initialized, we need to add a constructor, and here we will inject simply that configuration interface, and let us assign like this. So our configuration property is initialized, and let's pass this configuration here like this. Now the services are successfully integrated to the startup project, and that should be working fine. So it's almost getting 35 minutes of the video, and I think it's pretty lengthy. If it will be a more lengthy if we continue. So in the next episode हम इसको चला के इसको एक ड्राई रन देंगे, और उसके बाद इसको चला के चेक करते हैं कि और इसमें माइग्रेशन ऐड करके चेक करेंगे कि माइग्रेशन ऐड हो रही है हमारी सिस्टम में, और after that step we are good to go with the data layer, and we will start working on a services layer. So let's meet in the next episode. Till then, bye bye.